Solve ATP paper of 0625 version 61 May June 2024, and let's start with okay, starting with the first question. In first question, what we have, the statement is given here for the experimental setup, and there we have a diagram. What we have to do, we have to describe one technique you would use to obtain an accurate value for L naught. So what is L naught we have to look for? The L naught is the length of the spring when the load L on the spring is zero. It's mean without any load, what will be the length of the spring? You have to tell. Okay, you have to tell the technique how you can measure it. So these are the possible answers that I have given here. First possible answer is how we can correctly take the reading. Achha, the challenge is if you see here, we can't judge properly which point is this on the scale, right? हम guess कर सकते हैं, लेकिन we can't tell accurately कि ये कहाँ पे आ रहा है. तो to tell accurately what we can do कि आप इस spring को इस scale के पास ले आओ. One way is this, right? इस spring को यहाँ से detach करो और यहाँ से इसके पास ले आओ and take the reading from this point to this point. This is one method और इसके accordingly आप picture बना सकते हो साथ इसकी. Okay, that is one answer. Okay. अच्छा, if you don't write it, there is another choice. The other possible answer is you can use a set square of the pointer. The set square is anything that can point out this point of the spring on the scale. आप एक कोई स्केल रख सकते हैं या आप कोई और पॉइंटर चीज रख सकते हैं. इट कैन बी एनी स्ट्रेट थिंग. ठीक है, कोई भी जिससे आप पॉइंट आउट कर सको कि ये पॉइंट एग्जैक्टली स्केल पे कहाँ है. दिस थिंग इज कॉल्ड सेट स्क्वायर, राइट? तो सेट स्क्वायर के थ्रू आप बताओगे कि यहाँ से यहाँ तक रीडिंग क्या है. तो इसके अकॉर्डिंगली यू कैन ड्रॉ द पिक्चर विद इट. और इसके हमारे पास the corresponding diagram is this if you use the set square, right? अच्छा, third possible answer is what we can tell the one technique that view the scale at the right angle. आपने जो रीडिंग लेनी है that should be right angle parallel to the scale. So that is also called parallax error, right? We have to avoid the parallax error. So in तीनों में से you can write down any answer that will be acceptable. और इन तीनों की अपनी अपनी एक respective pictures हैं जो आपको बनानी पड़ेंगी. I strongly recommend के choose one of them. Don't overwrite because ये आपके against ही जाएगी. That will not favor you. अगर आपने कोई भी एक चीज contradictory लिखी, you will lose the mark. So these are the three possible answers. There are many possible, two, three more possible answers for this question जो कि आप लिख सकते हैं. Those are acceptable. आप marking scheme से भी refer कर सकते हैं, right? Okay, so let's move towards the part B. Here is a statement given. You can read it. And what we have to do in this is the main question. Calculate the extension E of the spring using this equation. Okay, equation is also given. So what you have to keep in mind in ATP, आपने खुद से कोई formula use नहीं करना होता. They will give you the relation that you have to use, right? So extension का formula given है L minus L naught. When load is 5 Newton, record this value in table. This. अच्छा. What is L naught? L naught is the original length, right? When the load is zero. So if you see there is a table, one column is for the load, one is for the length, one is for the extension. Okay, so when the load is zero, that is the length. So with the zero load, length is called L naught, original length, right? So this is L naught, and we have to find extension for the 5 Newton load. So where is the 5 Newton load? Here it is. For the 5 Newton load, we have the length. So extension will be L minus L naught. You have to apply this formula. Just put the values in this relation. L is basically 23.7 that we're writing here, and L naught is 2.1 that is there. You have to subtract them, right? And answer will be 21.6 that you have to put here. That's it. Okay. Let's move to the part C. In part C, what they are telling us, we have to plot the graph. We have to plot the load on the y-axis, extension on the x-axis. First of all, you have to label the axis like this. This is for the 1 mark, okay? If you are not writing, labeling the axis, 1 mark आप lose कर देंगे. Even if you're not writing down the units with it, okay? So that is the format. 1 mark is for the labeling of the axis. Second mark is for the scaling. What is the scaling?
जस्ट स्केलिंग का बेसिक क्राइटेरिया ये है कि आपके पास जो पूरा ग्राफ आपको गिवन है, टू थर्ड ऑफ द graph should be covered, right? You have to choose scale like this. So, load and extension. So look at the load. Load की values आपकी start होगी 1 से 1 till 5. And how many division we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is the perfect. We can scale it like this. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. It's covering almost more than 75% area. Okay. अच्छा एक्सटेंशन हमारे पास है कहाँ से कहाँ तक इट्स फ्रॉम इट्स वैल्यूज वेरिंग फ्रॉम 0 to 21 22 we can say, so it's perfect. We can take 5 10 15 20 and 25. So the graph will cover two-third of the area, right? Okay, so now what we have to do, we have to look at the values. We have to consider this column and this column. Okay, there is a very common mistake. Sometimes students have valued area होते हैं, तो they sometimes take value from this column mistakenly instead of this one. So आप इसको highlight कर लो या mark कर लो, whatever you do, just keep in mind this is on the y-axis, this thing is on the x-axis that you have to plot. Okay, so आप इसकी values देखो. When the load is zero, the extension is zero. So that is the first point here. Okay. Second point is when the load is 1, extension is 3.1, that is here. Okay. And when the load is 2, extension is 8.5, that is here. Load is 2, extension is 8.5. When the load is 3, extension is 12.8, that is this point. Okay. Then when the load is 4, extension is this, that you can look at here. And for the 5, extension is 21, that is like this. Okay. So what we have to do, we have to draw the best fit graph. The best fit graph may that graph should start from the origin. The reason is when the load is zero, extension is zero. That is a common sense of what we can say कि it's a basic physics, right? जब आप कोई लोड अप्लाई नहीं करोगे किसी स्प्रिंग पे भी तो कोई एक्सटेंशन नहीं होगी. एक्सटेंशन विल कम जब आप उसमें कोई लोड अप्लाई करते हो. एक्सटेंशन इज अ चेंज इन लेंथ. तो चेंज विल कम जब आप उस पर कोई लोड अप्लाई करोगे. सो इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द जीरो एंड इट शुड बी अ बेस्ट फिट लाइन, राइट? तो बेस्ट फिट लाइन के अंदर आपके पास द क्राइटेरिया इज द पॉइंट्स above and below the line should be almost equal. Okay, so that is the graph that we have to make. In the part D, what we have to do in part D, we have to find gradient, we have to show all the working, and we have to indicate on the graph values you use. Okay, so how we can take the gradient? And so for the gradient criteria is first thing how we can find it. आप कोई भी दो पॉइंट्स चूज करेंगे लाइन के ऊपर एंड वी विल अप्लाई राइज ओवर, राइट? सो line we will choose points will be chosen in a way that they should cover more than half of the line. Okay, आपने कोई इस तरह से एक क्या कहते हैं उसे एक चुन्नू सी ट्रायंगल नहीं ले लेनी. It will be wrong. It should cover almost half of the line or more than half of the line. Okay, so you can choose any 2 points. I'm going to choose one point. मुझे ये suitable लग रहा है, this one, and the other point I can choose. Let's take this one. Okay, it's your choice. You can choose any 2 points. So this will be, it will be like this. Okay, this is rise and this is the run. Okay, you have to show it here. It's y2 minus y1. This will be x2 minus x1. Okay, now you have to subtract the coordinates and you have to put the values here. So for the gradient, g will be equals to y2 minus y1 x2 minus x1. So what are these coordinates? These are mm, it's 4.5. Each block is showing zero point 0.1 to 4.5 and 4.6. It's y is 4.6 and x is 20. So it is 20 and 4.6.
And this one is um, it's almost here. It's between that. It's 4 we can say. The 2 points are showing 1, right? So this is 1, 2, 3, 4. 4 point. Sorry. So we can say it's 4 and y is 1. So let's put the value here. It's 4.6 minus 1 divided by 20 minus 4. So 4.6 minus 1 is 3.6 divided by 16. So let me calculate 3.6 divided by 16. It will give us 0.225. So it will be 0.225. Okay. In the next part, what we have to do, G is numerically equal to the spring constant. So it's mean G is equals to K. Record the value of K to suitable number of significant figures and include the units. Actually, you can write down 2 or 3 significant figures, both are acceptable, depending on your units. And significant figures depends on the data we are using. Okay, so it can be written as 0.22, and units are it's on the y-axis it was Newton, and on the x-axis it was centimeters. So it's rise over Newton per centimeter. Okay. Okay, so let's move to the second question. Question 2 is you can read this statement, and there's a circuit given, and we have 2 meters, ammeter and the voltmeter. First part is record the reading on the ammeter and voltmeter. Okay, first you have to record the reading from the ammeter. So let's focus on this. Units are ampere. Okay, so from this point to this point is 0.2. And how many divisions are there? There are 10 divisions. It's mean one division will be equals to 0.2 divided by 10. That will be 0.02. Each division is showing 0.02, right? So this will be 0.22, 0.24, 0.26, 0.28, and 0.3. 0.32, 0.34, and 0.36. So that is 0.36. Okay. And for the voltmeter, it's from this till this point, this is 1. There are 5 divisions 1, 2, 3, 4, 5. So 1 divided by 5 is 0.2. So each division is showing you 2, representing 2. So it's 1. So this thing is 1.2 and this thing is 1.4. So current is 1.4. Okay. Okay. So in the second part, you have to find R30, R50. R50 is equals to V50 divided by I. So what was V50? We have to look at, yes, this is the V50. That is 1.4. And what is I? I is also given 0.36. So you have to divide them. Let me do it. 3.9 divided by 3.89. This will give you, yeah, this will give you 1. No, I'm doing something wrong. It's there is a mistake. V50 is not 3.9. The V50 is 1.4 and I is 0.36. Okay, so there is some mistake. So it should be 1.4 divided by 0.36. So it will be 3.88.
and we have to include the units. Okay, that will be the ohm. Next, you have to find R1. R1 is equals to R50 divided by D. D is given, that is 50. So R50 was 1.4. So 1.4 divided by 50, you will get this answer. And then you have to find R2. R2 is R75 over D. That is given. What is D? D is given here. It's 75. And what is R75? We have to, there we go. Oh, okay, that is given. That is given. We don't have to find anything here. We have to tell the answer of this thing. What we have to do, state whether your results support the suggestion and justify your statement by this. Okay, so okay, so basically we have uh, R1 and R2. They're asking us, okay, can we say that these values are equal or not? Okay, so that is the value that they have given for R2 और ये वो value है जो हमने calculate की थी. अच्छा, what the criteria is, how we can say they are equal? If you see they are not equal, right? दोनों में थोड़ा सा difference है. Difference कितना है? That is very important. इन दोनों values में if you see, if the difference is less than 10%, then they come in the limit of experimental accuracy. अब जब भी कोई experiment perform करते हैं, there are chances कि कुछ ना कुछ fluctuations आए in real life. आपको exactly same answers नहीं मिलेंगे if two different persons are solving the questions, right? So there is a high possibility के error हो. So if the difference between the two values is in the range of 10%, so then it's perfectly fine. You can say that कि वो दोनों के आपस में equal है. So if you see this value and this value, it come in the range of 10%. Yes. So first in the statement we write yes, it's for the suggestion. Then you have to justify why you are saying this, because R1 is this, R2 is this. Both values can be considered equal as they are in limit of experimental accuracy, and limit of experimental accuracy is what? It's 10% plus or minus. It's acceptable. They should be in that range. Okay. Second part में आपसे कह रहे हैं student plans to plot a graph of resistance R against the length D to test the suggestion. Suggest suitable additional values of the length D. Okay, so where was length D? Let me check. There is a length D. Length D can be from, we are taking the reading in centimeters. So your total length 100 centimeter, that is given, right? So the values can be between 0 to 100 centimeter, any value. Okay. So कुछ values तूने ली हुई है 50 they have already taken, 75 भी use कर चुके हैं. So apart from them you can write down any values. What I have chosen is 30, 45, 80. अब कुछ भी ले लें. You can take 90, you can take 60, you can take 20. Okay, it's your choice. C part. A variable resistance is the circuit component that can be made using a coil. आपने variable resistor का symbol draw करना है. So that is the symbol for it. Okay. Okay, so let's move to the question 3. Question 3 is from the light section. Okay, this is the diagram that we have और आपसे कहा जा रहा है कि आपने this is the question that we have to answer on figure Mayer H naught. अच्छा, Mayer is the command word. जब भी Mayer का word आएगा you have to use scale. मतलब it's not always scale. Sometimes you have to make the angle as well. लेकिन आपको measurements लेनी पड़ेंगी with the apparatus, right? So let's take the reading. Where is my scale? Let me show you how we can find it. Okay, there we go. We have to find H naught. H naught is given clearly, right? So on one side there should I should place 0, so it will be easier to take. Where is 0? There is 0 on the scale, right? So if you see, that is my 0 of the scale, right? And it's moving till that point. It's more than 1.5. It's 1.6 almost, right? If I places if I place it like this, you can exactly see it is 1.6. Yes, it's 1.6. Okay, let me zoom in so you can easily check it. It's 1.6. Okay, so that is how you can do it. Acha,
if you people are mostly solving, आप print ले रहे होते हो पेपर को on A4 पेज, तो आपके आंसर्स मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली नहीं आ रहे होंगे. ओके, व्हाई दे नॉट कमिंग अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम? क्योंकि जब वो पेज आपका प्रिंट होके आता है उसकी डायमेंशंस चेंज हो जाती है. डायमेंशंस जो आपका कैमरे जो आपको वर्कशीट देती है उसके डायमेंशंस डिफरेंट है, इस फॉर्म में उसके डायमेंशंस डिफरेंट. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि आप जो रीडिंग ले रहे हो 1.6 नहीं आ रही. यू जस्ट नीड टू नो द मेथड. और जब अप्लाई करोगे आपके स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ पे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एग्जामिनर वहां पे आपको उसके अकॉर्डिंगली खुद मेजर करके आपको मार्क्स देंगे. कैम्ब्रिज में वो अपनी रीडिंग डिफरेंटली, देयर इज अ डिफरेंट क्राइटेरिया. ओके, सो वो मार्किंग स्कीम से समटाइम वैल्यूज मैच नहीं करती हैं. स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि सर वैल्यूज हमारी डिफरेंट आ रही है, मार्किंग स्कीम डिफरेंट है. ओके, सो दैट इज बिकॉज ऑफ द डायमेंशन ऑफ द पेज ऑन विच यू आर टेकिंग द प्रिंट. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट पार्ट में भी आपने क्या करना है? नेक्स्ट पार्ट में भी वी हैव what we have to measure again. Measure distance x. What is x? We have to look at this is x. Okay, so we have to measure x. Let me zoom in. And where is my scale? There we go. There is my scale. And जीरो को हम रखते हैं कॉर्नर में. यहाँ पे जीरो आ गया और यहाँ पे आ गया. इट्स एग्जैक्टली टू, राइट? यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एग्जैक्टली टू पे आ रहा है. ओके, सो इट्स टू. ओके, so I don't need scale now. So it's 2 centimeter. Then we have to, now the command word is calculate. See, अब measure नहीं है. Calculate mean you just have to put the values. Formula given है आपको r is equals to u over x. You just have to put the values. U is what? What is u? Uh, okay. What is u is, okay. We have to find the actual distance u between the illuminated object and the lens is, अच्छा, u is given. That is u. Here you go. U is 20 and x is 2. You just have to put the values, you get 10. Okay, units nahi aayenge inki because centimeter and the centimeter of x will cancel out with each other. अच्छा, u यहाँ पे भी given था. Okay, okay. In part C, what we have to do again, measure the distance y. Let's go back to the question. Where is y? ये y आपके पास. और मेरा scale कहाँ है? I have to use here. There we go. So let me zoom in. एक साइड पे आप कोशिश करें कि स्केल का जीरो आ जाए तक रीडिंग्स इजी हो जाए. ओके, देयर वी गो. इट्स ऑल सेट. नाउ इट्स 6.12, 6.2 something, right? 6.2. One point is at there, one point is there. 6.2. Okay, so I don't need scale now. Perfect. So it's 6.2 centimeter. Units are given already. So then they are asking us to find the v, and what the v is, calculate the actual distance. Okay, how? Between the lens and the screen using the equation v is equals to ry. Okay, ry, we have to use the equation. Y is 6.2, we have to put here, and r is 10. ऊपर calculate किया आपने. 10. Okay, so this will be 62. In the part D, what we have to use, we have to find f, and this is the equation given. आपने सिर्फ values put करनी है. U is also given. ऊपर हमने find किया हुआ है. V भी given है और आपको सिर्फ you just have to put the values and get the answer. In the question part E, in this type of experiment, it can be difficult to judge the screen position that produce the clearest image. So just two precautions or technique to overcome this difficulty. अच्छा, this experiment is from the light chapter. Light experiment है basically. Mostly light के experiment में हम same precautions लिख सकते हैं. One precaution is you can use dark room. या आप क्या कर सकते हो? आप bright object use कर सकते हो. It's the same thing. I am writing down or here. It's mean कि आपने दोनों में से एक लिखना है. अगेन डोंट ओवरराइट. ओके, ये आपको फेवर नहीं करेगा, ये आपके अगेंस्ट ही जाएगा ओवरराइट करना. तो दोनों में से एक चीज चूज कर लें, डार्क रूम या ब्राइट ऑब्जेक्ट. दे बोथ हैव द सेम implication, right? Second part, move screen slowly back and forth. Back and forth क्यों करें? Basically image, let me go to the diagram. यहाँ पे लाइट निकल रही है कहाँ से? यहाँ से लाइट पास होके लेंस से पास करी और लाइट ने जाके फोकस करना है कहीं पे.
जहाँ पे लाइट फोकस करेगी वहां पे इमेज बनेगा, वहां पे क्लियर इमेज बनेगा। तो फोकस पॉइंट कैन बी एनीवेयर, इट कैन बी एट दिस पॉइंट, इट कैन बी एट दिस पॉइंट, इट कैन बी ऑन द स्क्रीन लकीली। अच्छा, अगर आपके पास क्लियर इमेज नहीं है तो व्हाट वी कैन डू, आप स्क्रीन को बैक एंड फोर्थ मूव करोगे, तो अगर आपकी स्क्रीन एग्जैक्टली फोकल पॉइंट पे आ जाएगी तो इमेज आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, सो दैट इज द टेक्निक। इन द लास्ट, हमने क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द इमेज दैट वुड बी सी ऑन द स्क्रीन। अच्छा, अब आपको इसमें से लाइट का थोड़ा सा नॉलेज चाहिए। देयर इज अ कन्वेक्स, दिस इज कन्वेक्स लेंस, राइट? सॉरी, कन्वेक्स लेंस में इमेज जब भी आपके पास बनता है, दैट इज in particular condition the image will be real image, and real image is always inverted image. If you see in the diagram, triangle इस तरह से ऑब्जेक्ट जैसे आप प्लॉट करें, तो इसका इमेज जो बनेगा that will be exactly opposite of it. Okay, so that will be the image, upside down, inverted. Let's move to the last question, planning part. The statement is given. अच्छा, स्टेटमेंट में कुछ चीजें आपके पास, they are the most important. This is the key point. Plan experiment to investigate how much composite strip bend when the load at one end, when it is loaded at the one end. Okay. Show the setup the student uses. अच्छा, ये आपको सेटअप एक गिवन है यहाँ पे। अच्छा, इस पे आपको एक वेरिएबल गिवन है जिसको आपने स्टडी करना है, किस चीज को, बेंडिंग ऑफ द स्ट्रिप को। और आपको ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, यू कैन रीड इट योरसेल्फ। और आपके पास अम, ये कंडीशन गिवन है, आपको इस चीज को देखना है। And these are the requirements. How many requirements are there? One, two, three, four, five, six. Six requirements. And they're almost same in every paper, okay? Uh, एक requirement there's chances कोई एक मिस हो सकती है, एक ऐड ऑन हो सकती है, लेकिन they are 90% सेम हर एक पेपर में। So I have a generic layout for this, जो कि आप हर एक क्वेश्चन 4 में एटीपी के अप्लाई कर सकते हो। That work excellently and you can get full marks by using this. फर्स्ट, एडिशनल ऑपरेटर्स आपने हर क्वेश्चन में मेंशन करना होता है। तो इस इक्वेशन में, जब फर्स्ट थिंग वी हैव टू लुक एट कि हम स्टडी क्या करने जा रहे हैं, हमें स्टडी करना है इसकी बेंडिंग को, कि हाउ मच द स्ट्रिप कैन बेंड। अच्छा, किस चीज से, किस फैक्टर के चेंज करने से, ये हमें गिवन नहीं है, बाउंड भी नहीं किया गया। सम टाइम एग्जामिनर बाउंड कर देता है आपको कि इस चीज को चेंज करके ट्राई करें। यू हैव द चॉइस। अच्छा, व्हाट चॉइस वी हैव, वी कैन अटैच अ लोड। आप लोड को इंक्रीज कर सकते हो यहाँ पे, एक लोड कर दिया, साथ एक और लोड अटैच कर दिया, साथ एक और लोड अटैच कर दिया एट अ फिक्स पॉइंट। दिस इज द फिक्स पॉइंट। ओके, फिक्स पॉइंट मीन इट्स हैज अ फिक्स लेंथ फ्रॉम दिस पॉइंट। तो फिक्स लेंथ पे आप लोड्स को चेंज कर सकते हो। तो इसमें आपका कंट्रोल्ड वेरिएबल क्या हो जाएगा, लेंथ। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा आपका, लोड, जो कि आप चेंज कर रहे हो। अच्छा, देयर इज अनदर चॉइस दैट यू कैन यूज। आप लोड एक ही रखो, आप उसको कभी यहाँ हैंग कर दो, फिर आप उस लोड को यहाँ से यहाँ ले आओ, you can attach it here and you can observe the bending. Okay, अच्छा, so that is your choice. मैं इन दोनों में से किसी एक को चूज करके I will answer it. Secondly, bending को मेजर कैसे करना है हमने। अच्छा, what I can see, I can place scale at this point. Where is my scale? There we go. तो अगर मैं यहाँ पे स्केल रख दूँ परपेंडिकुलर किसी स्टैंड के साथ, तो what I can see, let me point out the zero here. ये यहाँ पे जीरो और मैंने मार्क कर लिया। नेक्स्ट टाइम जब मैं इसके साथ कोई लोड अटैच करता हूँ तो क्या होगा, ये स्ट्रिप आपकी बेंड हो जाएगी यहाँ से। इट विल बी लाइक दिस, राइट? तो जब ये बेंड हो जाएगी तो यू कैन टेक द रीडिंग फ्रॉम हियर, कि पहले ये यहाँ थी, अभी यहाँ पे आ गई है, फिर ये आपस लेट सपोज और बेंड होगी है यहाँ से, तो अगेन यू कैन टेक द रीडिंग फ्रॉम हियर। ओके, तो स्केल वी नीड। ओके, स्केल आपको चाहिए इसकी बेंडिंग को नोट करने के लिए, और हमें क्या चाहिए, वी नीड द लोड्स। लेट मी सी, मे बी लोड्स आर गिवन इन द apparatus. Mm, strip when they are loaded at one end, the components are made identical. No, we need the loads. Okay, so let's start. Additional apparatus. What I need, measuring tape or the ruler I need. Okay, so changing variable आपके पास, there are two types of variable. One is the changing, one is the constant.
चेंजिंग वेरिएबल्स में देर आर टू फर्दर डिवीजन्स, वन इज इंडिपेंडेंट, वन इज डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होगा जो आप खुद से चेंज कर रहे हो, राइट? जैसे मैंने कहा कि मैं डिफरेंट लोड्स पुट करूंगा वहां पे, तो लोड आई कैन चूज इंडिपेंडेंटली, लेकिन इस लोड की वजह से क्या चेंज होगा? बेंडिंग ऑफ द स्ट्रिप, तो दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज लोड जो मैंने चूज किया, और उसकी वजह से बेंडिंग हो रही है वहां पे, वो भी चेंज होगा वेरिएबल, लेकिन वो डिपेंडेंट है किस पे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। देन देयर इज अ कांस्टेंट वेरिएबल, वो क्या? दैट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिप, आई ऑलवेज हैंग द लोड एट द सेम पॉइंट। ओके, वो पॉइंट चेंज नहीं करे। प्रोसीजर में यू कैन टेक पॉइंट्स फ्रॉम हेयर, प्रोसीजर में कुछ की पॉइंट्स हैं दैट यू हैव टू मेंशन। Place the scale near the strip and this is the main point। अच्छा, ये सारा आपने प्रोसेस लिखना है इसमें। Then repeat this with different loads attached at the same length of the strip and take readings। That is also important कि आप लास्ट में लिखो इस पे कि आपने different loads attach करके दोबारा से उसकी रीडिंग्स लेनी है। ओके, सो इसका सेपरेट मार्क होता है आपके पास मोस्टली, दैट इज द एडिशनल मार्क। देन द टेबल वाज रिक्वायर्ड, टेबल में आपने एक लोड की रीडिंग ली है और आपने बेंडिंग की रीडिंग, दैट इज द फॉर्मेट कि आपने इसमें फिजिकल क्वांटिटी स्लैश इट्स यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटी स्लैश इट्स यूनिट्स। ओके, रीडिंग कभी भी आपने यहाँ पे पुट नहीं करनी, बिकॉज वी आर नॉट एक्चुअली डूइंग द एक्सपेरिमेंट, इट्स द एटीपी। ओके, अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल। कंक्लूड कैसे कर सकते हैं हम? वी कैन प्लॉट ग्राफ बिटवीन लोड एंड बेंडिंग टू कंपेयर देम। ये आंसर आप कंक्लूड करने में किसी भी क्वेश्चन में दैट इज वैलिड। ओके, so you can just write it down anywhere, that's it। So we are done with this paper। Okay, for the ATP the tip is, in the first three question आपने अपना दिमाग बहुत इस्तेमाल नहीं करना, you don't have to apply any formula। चीजें गिवन हो, you just have to follow the instruction। अब जितना अच्छे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में, रीड करके उसे इम्प्लीमेंट करने में, you can score maximum। इन फोर्थ क्वेश्चन व्हाट यू नीड, आपको थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा कि प्रैक्टिकली क्या चीज फिजिकल फिजिबल है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। ओके, अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो करोगे तो आपकी जिंदगी काफी आसान हो जाएगी और आप इजीली सब चीजों को आंसर कर सकते हो। इट्स अ 7 मार्क क्वेश्चन, हर एक चीज का डिफरेंट 1 1 मार्क है आपके पास। जैसे आपने ऑपरेटर्स मेंशन किया, यू गेट 1 मार्क, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल 1 1 मार्क, कांस्टेंट वेरिएबल 1 मार्क, प्रोसीजर में एडिशनल पॉइंट का 1 मार्क आ गया, टेबल का आ गया, देन इंक्लूजन का बस 1 मार्क आ गया। यू गेट ऑल द मार्क्स। ओके, इफ यू फॉलो द फॉर्मेट, इवन कि अगर प्रोसीजर में आपने थोड़ी सी गड़बड़ भी कर दी है तो। ओके, सो दैट्स इट। गुड लक।